So Ali, you tend to record all of your classes? As in physics, chemistry, maths, if you have bio, whatever. ऑलराइट यार, किसी और की भी रिकॉर्डिंग को अगर ऑन करना है ना तो प्लीज लेट मी नो बिफोर आई गेट स्टार्टेड. So anyone else? So फिर Ali, when do you find time to review the lecture? Because every class is like 1.5 hours की. So if you have 3 subjects, so I'm presuming कि फिर 4.5 hours तो lecture को review करने में लग जाते होंगे. Okay, you review them on weekends. हाँ सही है, sounds fair enough. तो यार थोड़े से स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. Oh, Reha, are you there? Oh, congratulations once again. I've actually felt कि यार तुमने A2 से बहुत मेहनत करना शुरू कर दी है. Because you know when I look at you, so मुझे तो वो O levels वाली रेहा ही दिमाग में आती है. So it appears that you know you're working on a different wavelength altogether. माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है. नहीं, don't worry, I'll pray for you, beta. All right, यार, so I better get started. So बेटा लास्ट वाली क्लास के अंदर we did the formula for ideal gases.
Charles law, Boyle's law, pressure law, universal gas law, and finally ideal gas equation. फिर उसके एग्जांपल्स भी ट्राई किए थे. सो अब जो रिमेनिंग थ्योरी है ना, उसको फिर आज स्टार्ट करा देता हूँ. So if you recall, in the previous class, we also discussed kinetic theory of gases. So मुझे वहीं से स्टार्ट करना है. So if you notice the headline, it should be appearing in front of you right about now. हाँ, तो यार kinetic theory of gases के अंदर if you remember हम लोगों ने 3-4 points किए हुए थे. They were based on your AS chemistry. So basically जो last वाला point है उसको हमने आज थोड़ा सा in detail discuss करना है. So मैं थोड़ा सा इसको zoom in कर देता हूँ so we can just concentrate towards point number 4. I'll read it alongside, तो आप लोग follow कर लो. ठीक है, so this is basically point number 4. So gas molecules perform perfectly elastic collisions with the walls of the container. As the molecules rebound elastically, मैं relevant terms को underline कर देता हूँ. So as the molecules rebound elastically from the wall, they bring about a change in momentum, delta P, thereby exerting a force on the wall. And since force per unit area leads to pressure, therefore, we can say that ideal gas molecules exert pressure on the walls of the container. Okay, so when gas molecules strike the walls of the container, since they rebound elastically, they bring about a change in momentum. That change in momentum per unit time gives rise to force. And the force exerted by the gas molecules over a unit area leads to pressure. So in short, we can conclude that when ideal gas molecules collide with the walls of the container, they are known to exert pressure on the walls of the container. So आज इस pressure की discussion करनी है. So if you continue further, in the next statement it states, the pressure exerted by ideal gas can be calculated using the formula. So I'll write down the formula first, फिर इसके symbols explain कर देता हूँ. So this formula can be used to calculate the pressure exerted by ideal gas molecules. It is referred to as P is equal to 1/3 rho C square, which is inside the square brackets. Now, since the derivation of this formula is required, so in a while I'll move on to that. इससे पहले मैं जरा symbols identify कर दूं, तो वो आप जरा देख लीजिएगा. The symbols should be appearing in front of you. See, so P in this case refers to the pressure of the ideal gas. हो सके तो formula learn भी कर लेना, अभी use भी करना पड़ेगा. Rho implies the density of the ideal gas, and the quantity C square, which is written inside the blue colored brackets, that quantity is referred to by the term mean square speed of ideal gas molecules. So इस term को भी define करेंगे कि ये नाम क्यों originate हुआ है. So before I move on to the description of this term, पहले term understand कर लें. So mean की representation in physics is done by the use of these square brackets. ठीक है, so mean की representation is done by the use of the square brackets. मैं arrows बनाता जा रहा हूँ. अच्छा, स्क्वायर का टर्म चेक कीजिएगा, वो आपके पावर के साथ मैच कर जाएगा. ठीक है, so mean is represented by the brackets shown with the blue marker. स्क्वायर का फंक्शन आपके पास पावर की फॉर्म में इंडिकेट हो रहा है, और स्पीड के लिए the symbolic representation is c. ठीक है, so the quantity c square inside the brackets is referred to by the name mean square speed of ideal gas molecules. Mean is indicated by the blue brackets,
स्क्वायर का फंक्शन आपके पावर के साथ एसोसिएटेड है, और स्पीड के लिए आपका सी का सिंबल आ रहा है। तो यार ये फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे होगी ना, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ साथ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म मीन स्क्वायर स्पीड, वो भी साइड बाय साइड डिस्कस हो जाएगा। नाउ द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ये एक्चुअली थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है, सो दिस डेरिवेशन काइंड ऑफ इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 5 स्टेप्स। सो एग्जाम्स के अंदर राइट थ्रू द लास्ट 10 years or so, I have never seen them asking the entire derivation in one go. So पूरी डेरिवेशन तो कभी भी नहीं पूछी है। सो आई हाईली डाउटेड कि यार वो उनका इंटरेस्ट ये है कि वो आपसे पूरी डेरिवेशन वन गो में कराते हैं, बिकॉज वो लेंदी हो जाती है। बट यूजली वो ये करते हैं कि वो डेरिवेशन को बिट्स एंड पीसेस में उसका कोई एक पोर्शन पूछ लेते हैं। सो नॉनदलेस लर्न तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, बट सॉरी यार, मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड। सो आई एम होपिंग यू कैन हियर मी नाउ। वो आई थिंक किसी वजह से कनेक्टिविटी बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी। All right, can anybody just give me a audio check please before I get started? All right, ठीक है, so you guys are there ना? All right, सही है। So sorry यार, वो I think connectivity अचानक ड्रॉप हो गई थी। Anyway, so as I was saying कि यार इस फॉर्मूले की डेरिवेशन will be asked in steps, तो इंडिविजुअल स्टेप्स की वर्किंग कर लेते हैं। So let me shift on to the next slide जहाँ पे डेरिवेशन हुई हुई है। ठीक है, so I'll do the working step by step, आप लोग मेरे साथ साथ फॉलो कर लीजिएगा। Sorry यार, ठीक है, so let's start with the diagram. So the diagram shows you a cube whose sides are marked as L units. See, so it's a cube of sides L. The statement over here suggests the gas molecule of mass small m starts from one wall EFGH, comma, it strikes the opposite wall ABCD, and then it returns back to the starting point. Okay, so think of a gas molecule of mass m. It is starting from one wall EFGH. It goes and strikes the opposite wall ABCD, and then finally returns back to its starting point. It then says, assume that the speed of the gas molecule in the x direction is denoted as Cx. Okay, so we are assuming that a gas molecule of mass m strikes the opposite wall and then returns back to the starting point. And we are assuming that the speed with which the gas molecule moves in the x direction, that is denoted by the symbol of Cx. तो पहला काम start करते हैं. So let's start by calculating कि force कैसे निकालेंगे. So remember AS में किया हुआ था. So force is basically change in momentum upon time. तो देख लीजिएगा. पहले change in momentum follow कर लो.
ना एएस में किया था, तो होपफुली आपको याद भी होगा. So I've written it down as follows: final momentum minus the initial momentum. Acha, notice one thing. Inside the bracket, I've included an extra negative sign. So can anyone suggest कि वो extra minus sign inside the bracket क्यों लगाई है? Before I continue. Direction. So direction का मतलब है since the molecule strikes the wall and rebounds back. So rebound करने का मतलब है there is going to be a change in direction. Or you can say the molecule will be traveling in the opposite direction. So hence the minus sign inside the bracket, because the molecule after collision will start moving in the opposite direction. ठीक है. अच्छा, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. मैं सर्कल कर रहा हूँ रिजल्ट को, आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास फोर्स का वर्कआउट करके आ गया. अच्छा, अब फर्दर आगे रीड करिए. सो वी कैन डिफाइन टाइम एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by the speed. So since the molecule goes and then comes back, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका L plus L 2L हो जाएगा. ठीक है, अगर वो जाकर वापस आता है, so distance traveled will be 2L and the speed is cx. So time taken for it to go and to come back is distance upon speed. So distance is 2L, speed is cx. Let's replace this value of time in the above equation. So मैं टाइम को बेटा रिप्लेस करता हूं, और ये काम मैं एरो बना देता हूं. तो आप जरा प्लीज रीड कर लीजिएगा. तो आप टाइम की रिप्लेसमेंट इक्वेशन के अंदर करके देखो, और मैंने जो आगे आंसर लिखा है ना, तो फर्स्ट वाले स्टेप तक आप पहुंच जाओ. मैं फर्स्ट वाला स्टेप मार्क कर देता हूं, और मुझे जरा ओके का सजेशन दे देना इफ यू हैव अराइव्ड एट दिस आंसर. सो मैं फर्स्ट वाले स्टेप के अराउंड जो है ना, एक बॉक्स बना देता हूं. तो आप लोग जरा रीड थ्रू पहले कर लो, और रीड करने के बाद स्टेप 1 तक पहुंच जाओ. ठीक है, अगर स्टेप 1 तक हो जाए ना, तो मुझे जरा ओके का सजेशन दे दीजिएगा. आयशा, इट्स अप टू यू ना, कि आप फाइनल का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो या इनिशियल का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो. सो आयशा, वो तो आपकी अपनी चॉइस है. आई हैव टेकन द फाइनल डायरेक्शन एज पॉजिटिव. हाँ रेहा, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आयशा ने पूछी है. आई हैव टेकन द फाइनल डायरेक्शन एज पॉजिटिव. सही है. सो विच इज व्हाई आई हैव रिटन द फाइनल वैल्यू एज पॉजिटिव, and consequently my initial value becomes negative. ठीक है जी रोहेल. Since it returns to the same starting point, therefore the nature of collision is elastic collision. That's right. Okay, so I'm expecting कि आप लोगों ने फर्स्ट वाले स्टेप तक की वर्किंग फॉलो कर ली है. आप टाइम की वैल्यू को प्लीज प्लग इन करके देखो, सिंप्लीफिकेशन फॉलो करो, एंड ट्राई टू रीच द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेप तक थोड़े से और स्टूडेंट्स वर्कआउट कर चुके हैं, तो जरा मुझे ओके सजेस्ट कीजिएगा, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं. ठीक है, थैंक यू कंजा, थैंक यू आयशा. बाकी लोग भी जरा प्लीज फर्स्ट वाले स्टेप तक पूरा अराइव कर जाओ. और जरा 4-5 लोग मुझे ओके कर दीजिएगा. थैंक यू सिद्रा. सही से मैंने टाइम की वैल्यू को बेटा प्लग इन किया हुआ है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि आप रीड थ्रू करोगे, तो आपके पास स्टेप 1 तक का रिजल्ट आ जाएगा. ऑल राइट, अब फर्दर आगे मूव करता हूं. मैं स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूंगा ताकि नेक्स्ट वाला स्टेप आ जाए. ओके, सो यार, अब मूविंग ऑन फर्दर, जरा सेकंड वाले स्टेप तक की वर्डिंग्स को देख लेना. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग प्रेशर. सो आई हैव रिटन डाउन द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एज फोर्स अपॉन एरिया. तो अब आप यहां से स्टार्ट करो. ठीक है, मैंने पिंक कलर का हाइलाइटर यूज किया हुआ है. तो आप जरा रीड थ्रू करते जाओ until you reach step number 2. स्टेप 2 तक हो जाए ना, तो प्लीज जरा दोबारा मुझे ओके कर दीजिएगा. अच्छा, ट्राई टू रिमेंबर द डेरिवेशन एज वेल, स्टेप बाय स्टेप.
ठीक है, just a few more students if you are through with this point until point number 2. All right. हमजा तुम भी हिम्मत कर लो, हसन तुम भी हिम्मत कर लो, हसीब तुम भी ओके की हिम्मत कर लो, दाऊद आप भी कर लो हिम्मत, ताकि एटलीस्ट आई नो. अली मोहम्मद नाथानी तुम भी कर लो, अली जावेद आप भी कर लो. और ठीक है, काफी है बेटा, सही है. तो ये 2 स्टेप्स हो गए. अच्छा यार, तो इफ आई आस्क यू ना कि स्टेप नंबर 2 आपको क्या बता रहा है, सो द आंसर ऑफ स्टेप 2, इफ आई वर टू आस्क यू डिस्क्राइब करो ये आंसर आपको क्या बता रहा है, तो योर वर्डिंग शुड बी समथिंग अलोंग दीज लाइंस, that the result obtained from step 2 tells us the pressure exerted by a single gas molecule, provided that it is only traveling in the x direction. Let me repeat my statement, that the answer for step 2 is telling me the amount of pressure exerted by a single molecule of mass small m, provided that the molecule is only traveling in the x direction, or you can say the molecule is only traveling in the x plane. ठीक है, ये अब आपके 2 स्टेप्स हो गए. अब फर्दर आगे नेक्स्ट वाले स्टेप पे मूव करता हूं. ठीक है, सो पहले सिर्फ ये वाला पोर्शन देखिएगा जहां पर आपके पास स्टेप 3 लिखा हुआ है. सो आप पहले रीड करें और मुझे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं. सो मेरे साथ साथ रीड कर लीजिएगा. सो नाउ अज्यूमिंग दैट देयर आर n number of molecules all traveling in the x direction. ठीक है, so instead of a single molecule, let's assume that there are n number of molecules all traveling in the x direction. तो फिर प्रेशर का अमाउंट कितना बनेगा वो मैंने स्टेप 3 पे लिखा हुआ है. अब स्टेप 3 में 2 बातें नोटिस कीजिएगा. एक तो मैंने रिजल्ट को n से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस. और साथ में नोटिस कीजिएगा मैंने ग्रीन कलर के ब्रैकेट्स लगा दिए हैं. सो इफ एनीबॉडी कैन हेल्प मी आउट कि मैंने ब्रैकेट्स को इस वाले स्टेप पे क्यों इंट्रोड्यूस किया है. सो लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया है और साथ में मैंने ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. सो n से मल्टीप्लाई करना तो काइंड ऑफ मेक सेंस. ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं उसका आंसर आई थिंक आयशा ने सही लिखा है कि now since we are dealing with large number of molecules n, so we should be expecting that the molecules are going to be traveling at different speeds. Priya की wording भी सही है. There are so many molecules traveling with different speeds. Hence we must make use of the term mean or we must make use of the term average speed. ठीक है, तो brackets की introduction at this point kind of makes sense because now we are dealing with a large number of molecules. So we are expecting them to be traveling with slightly different speeds. Consequently, the idea of mean or the idea of average has now been brought to use. So अगर आप थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूं तो आप सिंबल्स देख लें मैंने क्या लिखे हुए. So capital N in this case is representing the number of molecules and the quantity inside the bracket उसकी मैंने wording लिख दी है. So mean square speed in the x direction or in the x plane, whichever wording suits you. ठीक है, so if I now ask you कि थर्ड वाला रिजल्ट क्या बता रहा है, then your answer should be that the result obtained from step 3 tells us the pressure exerted by all the n number of molecules, provided that they are all traveling in the horizontal plane. सही. अब फर्दर आगे मूव करता हूं. So from this particular point onwards, next step देख लीजिएगा. मैं सर्कल्स लगाते जा रहा हूं तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा. तो नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर व्हाट आई हैव डन इज आई एम यूजिंग अ रेड मार्कर. मैंने n मल्टीप्लाइड बाय m को रिप्लेस कर दिया है बाय द टर्म कैपिटल M.
एरो बना देता हूँ जस्ट इन केस, अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो, बाद में नहीं चाहिए होगा तो रिप्लेस कर दूंगा, हटा दूंगा. सो आई हैव रिप्लेस्ड n टाइम्स m बाय द टर्म कैपिटल M, और मैंने साथ में मेंशन कर दिया है. सो कैपिटल M नाउ रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, and capital M is equal to number of molecules multiplied by the mass of each molecule. ठीक है, so n times small m has been replaced by the term capital M. Capital M in this case represents the mass of all molecules, and capital M can be written as the product of number of molecules n multiplied by small m, the mass of each molecule. और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने मास अपॉन वॉल्यूम को चेंज करके उसका रिजल्ट डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया है. तो आई गेस वो भी आप फॉलो कर लोगे. ठीक है, सो मैंने दो चेंजेस कर दिए हैं. मैंने चेंजेस को साथ साथ आइडेंटिफाई भी कर दिया है ताकि आपको याद रखना आसान रह जाए, और मैं चेंजेस को टॉप पे लिख भी देता हूँ बिफोर आई प्रोसीड. ठीक है, तो मैं स्टेप 4 तक पहुंच गया हूँ. सो इफ यू डोंट नीड, मैं ये जरा एरोज वगैरह सारे पहले इरेज आउट कर दूं बिफोर आई कंटिन्यू. लेट मी स्क्रॉल बैक टू द टॉप, ताकि मैं ये सारे के सारे सिंबल्स को टॉप पे लिख दूं तो आपके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा. ठीक है, मैंने ये सारे बॉक्सेस वगैरह मिटा दिए हैं. सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल बैक टू द टॉप. अच्छा, स्टेप 4 के बाद बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, मैंने नीचे यार एक एम्प्टी स्पेस काइंड ऑफ छोड़ी हुई है. सो ये मुझे अभी यूटिलाइज करनी है. ठीक है, फिर ये मैंने स्पेस को भी खाली छोड़ा हुआ है. इन अ व्हाइल आई मूव ऑन टू दिस स्पेस, बट बिफोर दैट मैं जरा सिंबल टॉप पे लिख लूं. सो लेट मी मेंशन द सिंबल्स राइट एट द टॉप. कोशिश कीजिएगा याद भी रख लें. तो स्मॉल m is mass of one molecule. Achha, these are standard symbols which can be used throughout the topic of heat. So not just in this derivation, but throughout the topic of heat, these standardized symbols can actually be used. So capital N for number of molecules, and capital M for total mass of all molecules, where capital M is equal to n times small m. ठीक है, I've just written down that result once again at the top. तो सिंबल्स को आप आराम से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा. तो लेट्स फर्दर अब स्क्रॉल डाउन करके स्टेप 4 तक हो गया ना था ना, तो अब एक फाइनल स्टेप रह गया है. ठीक है, सो वंस अगेन बिफोर आई कंटिन्यू, let me just repeat the wordings. The answer that you're seeing right now, step 1 का answer, this was the force exerted by a single gas molecule provided that it is only traveling in the x direction or in the x plane. Then moving on, result number 2, the pressure exerted by a single molecule provided that it is only traveling in the x direction or in the x plane. फिर further आगे, result number 3 as well as result number 4. So both 3 and 4 are representing the total pressure exerted by all the n number of molecules, provided that they are all traveling only in the x direction or only in the x plane. ठीक है, तो यहां तक का रिजल्ट आ गया. अब लेट्स कंटिन्यू फर्दर. अब एक लास्ट स्टेप रह गया है. As I said, I've left some empty space over here to be filled out later on. तो लास्ट स्टेप नीचे हुआ हुआ है.
अब इसके फाइनल स्टेप की वर्डिंग्स देख लो एंड कीप इन माइंड कि जो रिजल्ट मुझे चाहिए था विच वाज शोन ऑन द प्रीवियस वाली स्लाइड, फिर फाइनली वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो पहले इतना रीड कर लीजिएगा। सो आई स्टॉप फॉर अ व्हाइल, आप लोग जरा स्टेटमेंट्स रीड कर लो एंड इफ यू गाइस आर एबल टू एक्नॉलेज द स्टेटमेंट तो मुझे ओके कर देना। सो आई स्टॉप फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, आप लोग इत्मीनान से इसको रीड कर लो। हो जाए तो प्लीज ओके करते जाइएगा। एक्सक्यूज मी गाइस। ठीक है, मैं भी साथ साथ रीड कर लेता हूँ। सो assuming that in reality the molecules travel with almost identical speeds in all directions, that is the x direction, the y direction and the z direction, सब थ्री डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। therefore the speed can be written as follows। तो पहले फर्स्ट रिजल्ट देख लेना। cx is representing the mean square speed in the x direction or in the x plane. Cy is representing the mean square speed in the y plane or in the y direction. And Cz is representing the mean square speed in the z direction or in the z plane. Then moving on, next वाले statement के अंदर, since Cx brackets equals Cy brackets equals Cz, assuming identical speeds in all direction, so then the top statement can be written down as follows. ठीक है, if you are okay with the yellow highlighted statement, तो मैंने उसी को सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल रिजल्ट स्टेप 5 में लिख दिया है। तो थोड़ी देर के लिए जरा ये स्टेप 5 वाला आंसर याद रखिएगा, क्योंकि अब आई नीड टू गो बैक। या दिस इज द स्पेस बिल्कुल जिसके लिए मैंने ऊपर स्पेस छोड़ी हुई थी, है ना। तो आप जरा सा ये स्टेप नंबर 5 प्लीज दिमाग में रख लो, अगर हो सके तो, ताकि नाउ नाउ आई कैन स्क्रॉल बैक टू द टॉप और जो एम्प्टी स्पेस रखी थी ना, वहां पर मैं इस रिजल्ट को यूज करके अपना फाइनल आंसर जनरेट कर लूं। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस टू बी स्टेप 5 एंड आई विल गो बैक एट द टॉप। आई राइट डाउन दिस इक्वेशन नॉनदलेस एट द टॉप, बट अगर हो सके तो याद रख लो। प्लीज। All right. So from step 5, that is, ये रिजल्ट था ना। This was the answer from the step 5. Replace जरा आप मेरे साथ साथ कर लीजिएगा। So this is what I'll end up with. P is equal to rho, तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा। मैं रेड वाले मार्कर से लिख रहा हूं। ठीक है, रिप्लेसमेंट मैंने कर दी है। बॉक्स चाहिए हो तो बना देता हूं, ऐसे करके बस लिख देता हूं।
ठीक है, if you simplify, you will end up getting the final result. ठीक है, so the empty space or the extra space which I had actually left a while back, उस जगह पर मैंने स्टेप 5 का जो आंसर आया था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है. सो एज ए सेट कि यार पूरी डेरिवेशन तो 1 गो में नहीं आती है, बट नॉनदलेस जो भी स्टेप पूछेंगे उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लीजिएगा. बट याद तो बहरहाल आपको पूरा करना पड़ेगा. सो आई एम अज्यूमिंग कि फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे ना, उसकी एक वर्किंग देख लेते हैं. उमर, सिंस आपने देर से ज्वाइन किया है ना, एंगुलर ब्रैकेट्स इंडिकेट मीन और एवरेज. आई गेस आप शुरू में नहीं थे जिस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रहा था बेटा. ऊपर इसके ऊपर वैसे मैंने लिखा हुआ था, तुम जब रिव्यू करोगे ना टॉप से वर्डिंग्स को तो तुम्हें मिल जाएगा. हाँ, वो आई डिड रियलाइज कि यू जॉइन लेट. सो वो ब्रैकेट जो है ना वो आपकी एवरेज को या मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब तुम बाद में इसको रिव्यू करोगे ना तो आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट्स के अंदर वो वर्डिंग मिल जाएगी. अब यार हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो उसको देख लेते हैं. सो लेट मी जस्ट गो फर्दर डाउन. अच्छा, मैंने लास्ट स्टेप के अंदर भी ये लिखा हुआ है ताकि आपको याद रह जाए कि वी आर रिप्लेसिंग इक्वेशन 5 इनटू इक्वेशन 4. यहाँ पे भी लिख दिया है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल रिजल्ट. एनीवेज, तो यार हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला इनटू प्रैक्टिकल सिचुएशंस. So how to calculate pressure exerted by ideal gas molecules using the above equation. So पहले diagram देख लेना. So imagine the diagram shows you 5 ideal gas molecules. ठीक है, मैंने उनकी स्पीड की वैल्यूज को मॉलिक्यूल्स के साथ साथ मेंशन किया हुआ है. So the speed ranges from 100 and goes up to I believe as high as 500. ऐसी random numbers लिखे हैं समझाने के लिए. And the density of the ideal gas is also provided to you. In this case, it is 4 kilograms per meter cube. Something along these lines, जो भी numbers given हो. The question is asking us to calculate the pressure exerted by this ideal gas. है ना? So in order to work out the pressure based on the formula, so पहला interest ये है कि we need to calculate this quantity, जिसको मैं येलो वाले मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ. सी पहले ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. सही है, तो hence the statement. Let us start by calculating the mean square speed. ठीक है, तब ये वाली क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करनी है, आप फॉलो कर लीजिएगा. मैं एक ही स्टेप के अंदर वर्किंग कर रहा हूँ. मुझे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर करना है. मुझे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद द ब्रैकेट्स आर इम्प्लाइंग कि मुझे उसका मीन करना है. मैं दोनों स्टेप्स को एक साथ कर देता हूँ. आई स्क्वायर द स्पीड्स बिकॉज ऑफ द पावर और बाद में मैं इसका एवरेज आउट कर लूंगा. देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स इन टोटल. स्क्वायरिंग करेंगे ना और बाद में एवरेज आउट करेंगे तो ये हो जाएगा. इट शुड बी 100 स्क्वायर. मैं मीन भी साथ ही निकाल लूंगा इन वन सिंगल स्टेप. 200 स्क्वायर, 300 स्क्वायर, 400 square, 500 square. Okay, and since there are 5 molecules in total, तो average निकालने के लिए मैंने add up कर दिया है. Now I need to divide this by 5. So before calculating the pressure, we are first of all calculating this quantity, which is referred to by the term mean square speed. So मैंने molecules की speed का square कर दिया और mean निकालने के लिए add up करके divided by 5 कर दिया. इब्राहिम ने लिखा हुआ है C square is speed square, right?
So yes, that's right. सही. So C represents Ibrahim's speed. So C square is basically speed का square. Air bracket then represents कि मुझे उसका average निकालना है. So I'm done with that average वाली working. I guess अगर आप figure out करोगे ना इसका आंसर, मेरा ख्याल है ये आएगा. And I'm sure you would agree कि इसके units भी आप judge कर सकते हो. है ना? Units आप ऐसे judge कर लीजिएगा कि speed के units होते हैं meters per second. Square करेंगे तो you'll end up getting meter square per second square. और mean भी करोगे तो average निकालने से the units will not change. Say so the units for mean square speed should be speed as meters per second. If you square it, you will end up getting meter square per second square. और mean निकालते हुए या average निकालते हुए your units should remain unchanged. ये था आपका first step का आंसर आ गया. That is calculating the mean square speed. अब let's use this value to work out the pressure. Density is given in the question. मैं बस डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ. So density is 4. Units का ख्याल रखिएगा. So that should be in kilograms per meter cube as it is. And the value of the mean square speed calculated from above. If you simplify this, then the final answer for the pressure exerted by the ideal gas in this case, pressure should be in Pascal. So I believe ये आ जाएगा. ठीक है. So हमने formula derive कर लिया different steps के अंदर, and we have seen that if molecules of an ideal gas are given to us, and if the speeds and the densities also provided to us, how can we apply this formula? Firstly, to get the answer for the mean square speed, and then how can we proceed on eventually with the intention of calculating the pressure exerted by ideal gas. जी 1.46 आ रहा है. मैंने राउंड ऑफ करके 2 SF पे कंजा 1.5 लिख दिया है. ठीक है. फर्दर आगे प्रोसीड कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट वाली वर्किंग देख लेना. मैं इसको वापस लिख दूंगा. So based on the formula that we have done, pressure is equal to 1/3 rho C square. So if you attempt to plot a graph of pressure on the y-axis against density on the x-axis, graph के axis को check भी कर लीजिएगा. So it's pressure on the y-axis and density on the x-axis. So let's see what will we end up with. So let me rearrange the equation. I'll get this result. Pressure is equal to 1/3 times. Pressure is equal to 1/3 times mean square speed times density. ठीक है. So I've purposely rearranged the equation with the intention of making this equation compatible with the equation of a straight line. That is y is equal to mx. तो जरा कंपेयर करके देख लेते हैं. So I guess आप भी जज कर लोगे कि on the y-axis if you plot pressure, if on the x-axis you plot density, then in this scenario the gradient of your graph corresponds with the function gradient is equal to 1/3 times mean square speed. So let me write down that result over here. So the gradient of this graph, which is plotted for pressure against density, the gradient over here corresponds to 1/3 times mean square speed.
So, imagine if I were to give you some point to work around with. Since the graph is passing through the origin, so I don't need to give you multiple points. Even if I give you 1 point, I guess काम चल जाएगा. So let me give you 1 point to work around with. So suppose करो, the pressure is provided to you. Again मैं values बस assume कर रहा हूँ समझाने के लिए. So imagine the pressure is given to you as 2 times 10 to the power of 5. And let's suppose the corresponding density is given to you as 5. And imagine if you are asked to calculate the mean square speed of the ideal gas whose graph is shown above. Okay, so based on the value provided to you on the graph, and just one value would suffice because the graph is passing through the origin, so I don't need to give you multiple values. So if you are expected to calculate the answer for mean square speed, so mean square speed can be worked out as follows. Since we have already established that the gradient corresponds to 1 upon 3 times the mean square speed. So use the value available to figure out the gradient. मैं थोड़ा सा scroll up कर रहा हूँ. Gradient का ये result आ जाएगा. 2 times 10 to the power of 5 divided by 5. Simplify आप कर लीजिएगा. So the final answer for the mean square speed, I think Kanza मुझे okay रोहिल ने answer दे दिया है. So that will be 120,000. And once again, units in this case should be the same units जो मैंने previously बताए थे. So meter square per second square. All right. अब मुझे यार यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना है जो आपके एग्जाम से बहुत frequently आता है. So imagine on the basis of this answer, let me just scroll a bit up. जगह मिल जाए. So imagine if the question asks you to calculate this function. Looking at the symbol, can anyone suggest how can I arrive at the answer of this result? So if the question is asking me to calculate this function, so looking at the symbolic representation, how can I arrive at this result? So I think you would all tend to agree with me that by looking at the symbol, as I said, you'd all agree with me. The question is basically asking you, पहले wordings में लिख लेता हूँ. काफी students ये वाली wording suggest करते हैं, and I think this kind of makes sense. I'm sure you guys would also acknowledge the fact कि जो question मैंने आपसे पूछा था to calculate, so the function which I gave you, in order to arrive at this answer, all we need to do is we should square root the previous answer, that was 120,000. So I think अगर आप square root workout करते हो ना, कंजा ने मुझे answer दे दिया है, मैं round off करके लिख लेता हूँ. So this is the answer that we should end up with. I'm sure हाँ 350 भी सही है अगर आप 2SF पे लिखते हो. So मैंने अब 346 लिख दिया है तो change नहीं कर रहा. But वैसे generally correct to two significant figures, it rounds off to 250. Nonetheless, अच्छा I'm sure you'd agree कि इसके units अगर आपको check करने हो ना, तो because of the square root function, the previous units were meter square per second square. But because of the square root function, आपके units should now change to become this.
ठीक है, so this answer that we are getting, let me write it down this way. This quantity in exams is termed as, जरा नाम देख लीजिएगा. So if you compare the wording which I have written with the symbolic representation, so it kind of makes sense why are we referring to this quantity by the term root, mean, square, speed. इन सारे टर्म्स को आप सिंबल के सारे टर्म्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो. सही है. सो द रूट अप्लाइज टू द स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, mean applies to the square brackets, square applies to the power, and speed is for the symbol of c. और अगर आपको पूरा नाम लिखना इनकन्वीनियंट लगता है एग्जाम्स के अंदर, they allow you to use the short form. So CRMS का शॉर्ट फॉर्म अगर आपको सूट करे तो ये भी सही है. और आई थिंक इसको भी आप रीड करके जज कर सकते हो. यू कांट रियली फॉरगेट. सो आर रूट के लिए, एम मीन के लिए, एस स्क्वायर के लिए. सो रूट, मीन, स्क्वायर, आर एम एस, और स्पीड के लिए सी. सो इन द एग्जाम्स इफ दे एवर आस्क यू टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, रूट, मीन, स्क्वायर, स्पीड, or in short, if they ask you to calculate CRMS, then all you have to remember is कि ग्राफ के ग्रेडियंट से पहले आप मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेना, जो मैं पिंक वाले मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं. और वंस आपकी मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू आ जाए, देन जस्ट रिमेंबर कि आपने इस आंसर को अंडर रूट करना है. देन द क्वांटिटी दैट यू विल गेट, दैट क्वांटिटी कैन आइदर बी रिफर्ड टू बाय द कंप्लीट नेम, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, or in short, it can simply be referred to by the term CRMS. ठीक है. So graph का gradient can be used to help us calculate the mean square speed, which is 120,000, and square rooting that function gives you a quantity which can either be referred to by its complete name, known as root mean square speed, or alternately short form के अंदर CRMS. All right, मैं 5 minutes रुकता हूँ, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ. ओके. मुझे लग रहा है मेरा सेशन जो है ना वो थोड़ा सा शायद मेरे पास इंटरनेट का बार बार ग्लिच हो रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको रिकनेक्ट कर देता हूँ. सो गाइस, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और रिकनेक्ट करता हूँ. पॉसिबली शायद सिग्नल्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि द कनेक्शन इज अनस्टेबल, सो इट माइट जस्ट ड्रॉप. सो लेट मी डिस्कनेक्ट फॉर अ मोमेंट. इसके बाद फिर मैं दोबारा से क्लास को रीस्टार्ट कर लेता हूँ. ठीक है, गिव मी 5 minutes. सो आई एम एंडिंग द लेक्चर राइट नाउ. इसको फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं. आप दोबारा रिकनेक्ट हो जाइएगा. होपफुली शायद बेहतर हो जाएगा.